तो come over and do an audition and did a couple of auditions. I think 6 audition किए. So I was junior scientist, somebody was senior. Not really a scientist, it's just my designation. कोई logic नहीं है. But then a lot of people ask me this question Instagram पे, तो I tell them different stories. और जब मैं छोटा था तब वहाँ पे बहुत ये सारे इश्यूज थे जो जोक्स में अभी मैं बोलता हूँ लाइट नहीं आती वगैरह, वो तब के थे. तो अब जब मैं बोलता हूँ तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं. माई पॉइंट इज नॉट इवन अबाउट द गवर्नमेंट. मैं जब की बात कर रहा हूँ तब मुझे याद भी नहीं कौन सी गवर्नमेंट थी. आई जस्ट एनी जोक आई से लाइज ओनली ऑन स्टेज. और अभी मैं एक एड देख रहा था कि स्वानंद किरकिरे का, एंड ही सेइंग द सेम थिंग कि लिरिक्स राइटिंग में लोग कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ पर लिखूंगा कब. तो अगर तुम सोचते रहोगे तो लिखोगे नहीं, पहले लिखो उसके बाद सोचो. द पॉइंट इज नथिंग शुड बी सीक्रेट इन कॉमेडी. People don't want to touch a subject and they're like यार ये इस पे जोक नहीं कर सकते. जोक कर सकते हो, फनी होना चाहिए. Hi everyone, welcome to a new episode of GreenRoom Chat. This is your host Shrirupa Sengupta, and today with us we have Shashwat Maheshwari. And you would have already known about Shashwat from the different things that he has done. But right now, most interestingly, he's not only a stand-up comedian, but he's also a commentator with Sony for UFC. So we're going to hear a little bit about his journey. Welcome Shashwat, how are you? कैसे हो? Thank you. मैं बहुत अच्छा हूँ. अच्छा, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन, बहुत शॉर्ट था और बिल्कुल प्रिसाइज था. अभी मैं जैसे आपने बोला अभी मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन साथ में स्टैंड अप लिख रहा हूँ. तो थोड़े 10-15 दिन का एटलीस्ट ब्रेक था जब मैं जोक्स लिख रहा था, बट कमेंट्री चल रही है पूरे टाइम. So how did you land up in this entire commentary thing? मतलब आपको पहले से MMA पे इंटरेस्ट था और is this something that just happened? Yeah, मैं इंटरेस्टेड था MMA में काफी टाइम से, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे होती है. मतलब मैंने यूएस वाला देखा था, UFC देख रहा था, बट आई डिडंट नो कि इंडिया में कमेंट्री हो सकती है. फिर मैं आई गॉट इन टच विद द पीपल एट सोनी एंड आई फिगर्ड कि इन लोगों के पास यहाँ ब्रॉडकास्ट राइट है. एंड देन आई स्टार्टेड पिचिंग देम कि सुनो मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, यू नो UFC से रिलेटेड. व्हाई डोंट यू लाइक लेट मी डू एनालिसिस. तो बोले एनालिसिस तुम क्यों करोगे, तुम्हारा क्या रिलेशन है इससे. देन आई सेड कमेंट्री कर सकता हूँ. आई स्टार्टेड पिचिंग देम आइडियाज एंड व्हेन दे फिगर्ड दैट दे वांट टू डू कमेंट्री, तो दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन सेइंग कि तुमको इंटरेस्ट था, तुमने पहले बोला था, वी रिमेंबर दैट, तुम्हारा 2 महीने पुराना मेल रखा हुआ, तो कम ओवर एंड डू एन ऑडिशन. एंड डिड अ कपल ऑफ ऑडिशंस. आई थिंक 6 ऑडिशन किए. Then I got it. This is awesome. And I think the entire thing about we should not email people that gets debunked by this. Yeah. आपका 2 महीना पुराना email भी उनके पास था. So send it out to anybody. You want to work with anyone, any company, any person, just send out an email. क्या worst case scenario वो देखेगा नहीं, best case scenario हो सकता है अच्छा लग जाए. भेज दो. Absolutely. And you started out in comedy in 2014, right? And I think for you, did you start out in comedy while you were in Kanpur, or is this something that you started after you moved out? So I was in Kanpur at that time. मतलब मैं जॉब वगैरह छोड़ी थी एंड मैं मास्टर्स करने के लिए जाने वाला था. तो मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, 1-2 एडमिट आ गए थे एंड देन पता नहीं क्या हुआ यार. मतलब मास्टर्स करने वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो गया. And so I had nothing to do. I was looking for something or writing. I was writing something at home. मैं कुछ लिख रहा था. And then I found out कि open mics भी होते हैं इंडिया में. मुझे पता नहीं था. तो जैसे ही मुझे पता चला तो एक हमारे कॉलेज के सीनियर थे, वो कॉमेडी कर रहे थे, प्रवीण कुमार इन बैंगलोर. तो I got his sorry हैदराबाद और बैंगलोर. I got his contact. Yeah, बैंगलोर. I got his contact. मैंने उनको बोला तो he told me कि दिल्ली में open mics हो रहे हैं, contact somebody over there. I contacted a couple of people there. फिर मैं कानपुर से दिल्ली गया open mic पर. तो मैंने एक open mic किया, अगले दिन एक और open mic का पता चला, वो भी कर लिया. Then like I got the hang of it, so I stayed there. I got a job at Scoop then. वहाँ पे मैंने काम किया and I kept doing comedy. And you are actually a scientist. I was. So this is I'm designation of a scientist. I used to work in a biotech company जहाँ पे research lab होते थे और 2-3 अलग-अलग department होते थे. तो research department में हमको दिया था और वहाँ पे designation ही यही होता है. So I was junior scientist, somebody was senior. Not really a scientist, it's just my designation. तो
ये कैची चीजें अच्छी लगती है ना, तो इसलिए जब कभी इंट्रो लिखते हैं तो ये आई थिंक लिख दिया होगा किसी ने. आई एम लाइक श्योर, मेक सेंस. इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट राइट आल्सो, बट इट्स नॉट अनट्रू, तो लिख दो. No, because I was wondering कि आपका जो Instagram handle है ना, कातिल कबूतर. I was wondering if science had something to do with it, or was it just your like your love or hatred for कबूतर? मतलब क्या सीन है उधर? I don't really think it was that also. मैंने आई थिंक सबसे पहले कब लिखा था, मैं डायरी में ना आगे नाम लिखता था अपना. तो बहुत सारी जोक बुक्स हैं, बहुत सारी डायरीज हैं, वो खत्म हो जाती थी, तो किसी में आगे मैंने लिख दिया कुछ घातक घड़ियाल, ऐसा कुछ लिख दिया. आई डोंट नो व्हाई आई रोट ऑल दैट स्टफ. आई स्टार्टेड राइटिंग दीज. तो एक में मैंने लिख दिया कातिल कबूतर. एंड देन जब इंस्टाग्राम में बहुत लेट आया था इंस्टाग्राम हैंडल बनाने में, और पूछ रहा था शाश्वत माहेश्वरी अवेलेबल नहीं था, किसी और का होगा. तो मैं कहा ठीक है, नाम लिखना जरूरी नहीं है, मैं उठा के वो चिपका दी, तो कोई लॉजिक नहीं है. बट देन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे, तो आई टेल देम डिफरेंट स्टोरीज. एवरी टाइम आई टेल देम कि अरे एक हम रहते थे हमारे घर के बगल में ना, एक कबूतर था, उसने ऊपर का गमला गिरा दिया था और बंदे के सर पे लग गया तो वो मर गया था. तो वहां से एक कातिल कबूतर है, किसी को मैंने कोई और स्टोरी चिपका दी, ऐसे कर करके मैंने 5-6 लोगों को बहुत सारी स्टोरीज चिपकाई. बट कोई स्टोरी है नहीं, नथिंग रिलेटेड टू कबूतर, बस लिख दिया रैंडम. If there is any kabutar who is like reporting to their CID, मतलब कबूतर को CID, it is going to be proof that you have been defaming kabutars. Yeah. So how was it like in Kanpur, and how does it look like looking back to where you came from, and now you're in Mumbai, you're pretty established in Mumbai, and I think that's where you're working, right? I stay in Mumbai right now. I grew up in Kanpur. कॉलेज के लिए मैं पिलानी गया, तो उसके पहले तक कानपुर में था. तो और जब मैं छोटा था तब वहाँ पे बहुत ये सारे इश्यूज थे, जो जोक्स में अभी मैं बोलता हूँ लाइट नहीं आती वगैरह, वो तब के थे. तो अब जब मैं बोलता हूँ तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि अरे आगे कानपुर देखो, कोई लाइट आती है, अब सब सही हो गया है, और इस गवर्नमेंट ने सबसे. एंड लाइक माई पॉइंट इज नॉट इवन अबाउट द गवर्नमेंट. मैं जब की बात कर रहा हूँ तब मुझे याद भी नहीं कौन सी गवर्नमेंट थी. आई जस्ट एनी जोक आई से लाइज ओनली ऑन स्टेज, बट पीपल टेक देम टू हार्ट. तो जब मैं छोटा था तब बहुत होता था कि लाइट नहीं आती थी, इन्वर्टर होता था घर पे, हम बाहर बैठते थे, रात में जब लाइट आती तो सारे मोहल्ला एक साथ चिल्लाता, लाइट आ गई. आने पे चिल्लाते थे लोग, जाने पे नहीं चिल्लाते. तो बहुत उस तरह का ही हमारा बचपन था. अभी ऑब्वियसली इट्स गॉटन बेटर, विच इज नाउ दैट आई गो बैक टू कानपुर तो लाइट आती, विच इज अ बिग चेंज. बट बाकी लोग वैसे ही हैं, इट्स सिमिलर. People are quite laid back. And writing is something that you always enjoyed? Yeah, but the amount of writing that I want to do does not, it's not translating. I want to write a lot of things, but कोई लेता ही नहीं है. मैं बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे पिचेस बना के दिए लोगों को, एंड पीपल डोंट टेक इट. तो आई थिंक थोड़ा सीखना पड़ेगा. और आई एंजॉय राइटिंग दो. यस, आई कीप राइटिंग. मैंने स्टोरीज लिखी हैं, वेब शो के कॉन्सेप्ट्स और मूवी के कॉन्सेप्ट सब मैंने लिख के रख लिए हैं, कि कभी अगर कोई बोले कि सुनो है कुछ दिखा दो, तो मैं दिखा सकता हूँ. बट कुछ बन नहीं रहा फिलहाल. जोक्स लिखने में भी मजा आता है, मेन तो जोक्स लिखता हूँ. And there are a lot of emails, I'm sure, which you're going to hear back from. Yeah, that also I write a lot. So when there was this one point in your life when you were a freelance writer, and History Channel features on that time of working. So what were you doing with History Channel? History Channel में there was a show, अब मैं नाम लूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, एक शो था. We'll just call it एक शो था. Yeah, some show is like a really crazy premise था उसका, और कोई बाहर के शो का ही इंडियन एडेप्टेशन था, वैसा था. और उसमें उनको कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिखने थे, वो कॉमेडी शो था, तो वो लिखना था. एंड देयर वाज अ राइटिंग टीम ऑफ लाइक आई थिंक 4-5 कॉमिक्स. हमने जैम कर करके थोड़े दिन में और लिख के दिया. अब वो शो कहाँ है पता नहीं, हमारा नाम है कि नहीं पता नहीं, कुछ नहीं. बट इट्स देयर ऑन माय रेज्यूमे, इट्स देयर. So it's a historical comedy show, I think. It's gone back in the books of history. It's now hidden. So what do you actually like writing about? Is it just writing for the love of writing, or is there something that I really enjoy writing about this? Like, there's a show that I've written the concept, I've written the pitch, everything I've written about it, but I haven't written obviously the dialogues वगैरह नहीं लिखे, पर वो पूरा लिख दिया. That was something that
that had happened in my life, तो उससे inspired था, वो एक शो लिखा था. उसके अलावा I just try to write every day. This is something that I read somewhere, or I have seen somebody say this, कि if you wait for inspiration, you sometimes you'll have to wait for months. तो तुम्हारा काम कभी हो नहीं पाएगा. और अभी मैं एक एड देख रहा था कि स्वानंद किरकिरे का, एंड ही सेइंग द सेम थिंग कि लिरिक्स राइटिंग में लोग कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ पर लिखूंगा कब. तो अगर तुम सोचते ही रहोगे तो लिखोगे नहीं, पहले लिखो उसके बाद सोचो. एंड दैट्स द सेम थिंग विद एनी काइंड ऑफ राइटिंग. जोक्स भी अगर तुमको लिखने हैं तो इंस्पिरेशन हर टाइम नहीं आता, लेकिन इफ यू मेक इट काइंड ऑफ लाइक अ हैबिट एवरी डे, तो कुछ ना कुछ आ जाता है. I try to write at least one joke a day, and that also it gives me a purpose कि आज मैंने कुछ किया, वरना तो मैं मतलब लाइव कॉमिक्स कुछ करते ही नहीं है, 20-20 दिन कुछ नहीं किया एंड शो करके आ गए, 1 घंटे का काम होता. तो नॉट अ लॉट ऑफ वर्क, नॉट अ ग्रेट रूटीन और शेड्यूल कुछ नहीं है. तो राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ माई डे दैट आई एंजॉय. So Shashwat, connected to this, right? A lot of your fans are fans of your storytelling, the way that you tell a story, right? And I understand from you that writing is a passion, you're doing it regularly, and all of that. Is storytelling something that you enjoyed since you were a child, or is this something that you picked up while growing up? I don't even know what I do is storytelling or not. I mean, most of the stories I tell are lies, right? So when people say कि ये बहुत ही, जैसे क्या होता है, कुछ लोगों की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मे बी दे सी इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग. मेरी लाइफ में खास इंटरेस्टिंग कुछ हो नहीं रहा है, मुझे झूठ ही बोलना पड़ता है. तो मैं बना बना के चीजें डालता रहता हूँ कि एक बार मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया. लोग कह रहे हैं सच में हुआ, नहीं, सब झूठ है. मेरी 90% of my premises, my jokes are all lies, but that's what, in my eyes, that's what comedy was. They're funny lies. Stephen Wright said that comedy is funny lies. That's what I believe. Just funny होना चाहिए. बात में सच होना जरूरी नहीं है. और मैं वहाँ पे किसी की लाइफ बदलने नहीं जा रहा और कुछ ऐसा ज्ञान देने नहीं जा रहा. मैं बस बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हंसी आनी चाहिए. I write jokes that make me laugh. If they make me laugh, I enjoy them. मैं जाके स्टेज पे बोल देता हूँ. उनमें से some people laugh at that, some people don't. But मेरा काम हो जाता है. That is quite a truth bomb. Although packed in lies. Yeah. So a lot of like kids are into comedy now, and I say kids because I myself think that I'm very old, but there are a lot of like newbies who are in comedy right now, and they're looking at different trajectories of growing in the comedy scene, right? And the comedy scene in India has become much more evolved from when you and I started, or even others previous to us like Praveen started, right? Now, your trajectory has been very interesting. And I think Comic Stan was something that you went in and you came out of, right? And you probably became a different comedian while in that process. And not just Comic Stan, but also before and then after, whatever you're doing with your comedy right now and your style and everything. What is it? What is, I won't say what is the one thing, but what are the things that you would like to tell the people who are starting comedy now on their comedy journey? And I'm not saying it like, give some great life advice, matlab aap dena chahte ho to de sakte ho. But what is your perspective in terms of comedy now in India? See, most of my comedy, the kind of comedy I do, or my inspiration comes from like a very few comics. I started watching Louis C.K. and that's when I wanted to really do comedy. Louis C.K. is there. Then I really love there's a Mitch Hedberg poster. Mitch Hedberg and Norm Macdonald. These are the 3 people that I really idolize. And unki comedy, because Mitch Hedberg's like genius but goofy. Norm Macdonald goofy, और कुछ भी जो माने बोल, हर चीज पे जोक कर सकता है, and that's something I enjoy. That you can make a joke about anything. And these people have gotten into trouble for their jokes. Now, recently Dave Chappelle's also got it, but for different reasons. But the point is, nothing should be sacred in comedy. People don't want to touch a subject and they're like, यार ये इस पे जोक नहीं कर सकते. जोक कर सकते हो, फनी होना चाहिए. नहीं होगा तब फिर लगेगी तुम्हें, क्योंकि वो रिस्क तो तुम ले ही रहे हो. यू पिक अ टॉपिक एंड मेक अ वेरी फनी जोक अबाउट इट, पीपल विल बी लाइक अच्छा बहुत फनी था, एंड देन दे डोंट थिंक अबाउट इट very anally. But if it was not funny also, then you're in trouble. Just try to make everything funny.
And inspiration here. A lot of comics don't watch stand up, but I feel like कि यार देख लोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. You should watch good comedy. You should see what other people are doing, and maybe you get inspired by it. Maybe you feel like there's a style that you like more than others, and only by watching or only by reading will you really understand कि तुम्हें क्या पसंद है. Some people are really good at telling stories, और वो अपने घर की और अपने आसपास की stories बताते ही रहते हैं. So that's one way to do it, but not everybody can do it. Some people will sit and write jokes. Some people will make up stories. Some people will do some sort of one-liners करते हैं लोग. Watch the art that you are in. I think that will help. And what has been your greatest takeaway from all the opportunities that you've got in comedy? Like from, and even ones which are not in comedy, right? Even the entire thing that you're doing now, which is not directly comedy, but at the end of the day, it is writing and speaking. And I think commentary is something that we do as comedians. As stand-up comedians, we are constantly, it's a running commentary about what we observe and what we are in. Right. So I think all of the opportunities that you have got in your life, and very well deserved ones, and I hope you get fantastic, better opportunities going ahead. But what is your takeaway from those? I think it's the people in the community. You don't realize how a lot of these people will help each other. Most of the shows that you get as a new comics are because somebody else referred you for a show. Somebody was getting a show, they're like, "ये मैं नहीं कर पाऊंगा, give it to him." And this happens constantly. And sometimes you don't even realize कि ये किसी और ने refer किया था तब तुम्हें मिला. So just don't get too big in your head, because you don't even know how the machinery is working behind you. A lot of people are helping you, and anybody grows, they grow because of the support of other people. Raghav Mandawa referred me to a job in Mumbai, to a thing. And then somebody, I remember, Ghosh referred me for a show. Then Karunesh referred me for a show. And then it happens all the time. I can't name a lot of people, but I'm saying this community, even though there's a lot of bitching, a lot of that hatred happens in every community, but also the people will look out for each other. And that's the Curse Crime gig that I got was all Adhiraj. Adhiraj Singh was working at Vice, and he said, "Hey, would you like to do this? I think you can do a good job at this." And I never applied for it. I just got it, and we had a lot of fun. That show went on to do well. But I mean, I was not looking out for a job like that. It just landed on me. So a lot of these things will happen because people are looking out for each other. I think that's very beautifully put. I think there's something that we often forget to do, right? We often forget to be grateful for the community we are part of. Yeah. And I think that is very important. The last question for you, right? Tell me one thing that you're really looking forward to. Looking forward to. I don't know if it's happening. I'm just pitching for something. If it happens, then I look forward to it. Or even if it doesn't happen, I'll make the show. I've written a show that I really want people to watch. So whenever that happens, I'm looking forward to that becoming reality. Fantastic. So fingers crossed for you. And I hope it happens one way or the other. And I'm sure everybody who's watching this would also want it to happen. So thank you so much, Shashwat, for being with us for the Green Room chat. And that's us signing off. Please follow Katil Kabutar, not the actual Kabutar, but follow Shashwat on his Instagram. He has a bunch of videos on YouTube, which if you haven't watched, you've been living under a rock. So you just go there and watch it. And thanks a lot for being with us, Shashwat. Lovely speaking to you. Same here. Thank you. Thank you so much, everyone, for being part of this. And thank you so much, Shashwat, for sitting with me and having this wonderful conversation. We at Green Room Chat loved having you here. For those of you watching, please remember to like, share, and subscribe this video. And not only that, please follow Katil Kabutar, okay? And Shashwat, any other shout outs that you want? Yes, go for it. Follow Shrirupa. Also. Oh, thank you. Yes, follow me, guys. Ghar tak mat aana, but follow. Chalo. Thank you. This is Shrirupa Sengupta signing off. Bye-bye.